guys attention here. मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसे राजा थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ अपने भूगोल से पहले ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट और हियर। रिस्पेक्टेड सर तो गायब है। One and all present or here, very good morning everyone. We all gather here today to celebrate our national festival, that is Independence Day. I proud on my country. I proud on myself to born in India. My deepest respect to all those great martyrs who has satisfied for India's independence. And that's why I would like to say, आज सलाम आहे त्या वीरांना ज्यांच्यामुळे हा दिवस पाहिला. आज सलाम आहे त्या वीरांना ज्यांच्यामुळे हा दिवस पाहिला. ती आई आहे भाग्यशाली जिच्या पोटी जन्मलेल्या वीरांमुळे हा देश अखंड राहिला. हा देश अखंड राहिला. We got freedom from Britishers, but our India is still living in the slavery of corruption. If we go for the admission, then they firstly ask for the donation. If we go to collect the FIR about someone in the police station, then they firstly demand for the bribes. It is the real condition of our country. Anyway, it has now become the rule of our country. But India has developed in educationally, economically and in health sector also. To respond to Pakistan terrorist attack, India's government launched a surgical strike. 25 para commandos had gone 3 kilometers inside Pakistan's border at midnight and killed 40 to 50 terrorists from 12 to 4 a.m. The special thing is that the surgical strike was taken under the guidance of son of Maharashtra, Lieutenant General Nimborkar. During surgical strike, there was only one focus in every soldier's mind, that was सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा. सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा. मैं देश नहीं मिटने दूंगा. मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब अपना कर्ज चुकाओगे. मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे. मेरा वचन है भारत माता से तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा. सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा. मैं देश नहीं मिटने दूंगा. In every field, India has been at the forefront, in religious as well as scientific also. During COVID-19, India has supplied COVID vaccination to the other countries. It is about scientific, and if we talk about religious work, then very big example we can see. The Ram Mandir and Babri Masjid case was running from so many days. Our Supreme Court solved it and verdicted to build the Ram Mandir. And our Indians accept it peacefully. It is the power of unity of our India. So I would like to say, रंग बलिदानाचा त्या तिरंग्यात पहावा. रंग बलिदानाचा त्या तिरंग्यात पहावा. उत्साह देशप्रेमाचा अंगी झळकावा. रंग बलिदानाचा त्या तिरंग्यात पहावा. उत्साह देशप्रेमाचा अंगी झळकावा. जयघोष भारताचा अस्मंती गुंजावा आणि सण हा स्वातंत्र्याचा सदैव चिरायू व्हावा. सदैव चिरायू व्हावा. So I stop here. Thank you for listening me. Thank you.